come to the whiteboard and then we will put the plotting. ये है question लिखो in BR. ये MMD का ही question है. 30 degree 15 minutes north, 2640 west, 2640 west. At the same like yesterday's, but instead of long background, it is intercept at 0945. Observation of the sun. Observation of the sun gave intercept 6.5 minutes towards on azimuth. On azimuth. Azimuth. Yeah. On azimuth 110. On azimuth 1102. ये similar question है, but इसमें क्या intercept दिया है, so it will be good. Vessel then steamed on course 248 degrees for 22 miles when a meridian observation of the sun gave latitude 30 degree, वो भी same है 30 degree. Find the position at the time of the second. Right. इसको मैंने थोड़ा चेंज किया है. It is actually same. It is 20 or 22, so we can calculate it. Otherwise, it becomes the same. It becomes boring. So now, as usual, number 1, find arrived position after steaming by plain sailing method. Plain sailing method, you know what to do. That is, course is 248. That means south. कितना है? 68 है ना? 68 west. Distance 22 miles. So you know the formula. Daylight is equal to, what is daylight equal to? Bolo. Cos into cos of cos into distance. Cos into distance, correct? Yes, sir. Is equal to cos 68 into 22 is equal to. अभी देखो कितना आता है? Cos 68 into 22 आया तुम्हारा 8.2, right? 8.2. ये south है, so it will be south. अब इसको arrived at 20 से 40 से घटा दो. arrived at साउथ इसका प्रीफिक्स है ना सर, इसलिए साउथ. हाँ, because course का है ना, course is south, no, so that means the latitude daylight will be south. अभी arrived at DR lat, mind you, arrived DR lat would be 36.6. 13, no, 30 degrees. 30 degrees 6.8. Yes, sir. 30 degrees 06.8 north. MLAT would be, दोनों का बीच में देखो कितना 8.2 है तो 4.1 ऐड करो. So 30 degree 10.9, correct? वो डिलाइट को हाफ करके इसमें ऐड करो या उससे सब्ट्रैक्ट करो, सेम थिंग. Now we come to departure is equal to
Sine cos into distance is equal to sine 68 into 22 is equal to कितना डिपार्चर 20.4 आएगी नहीं? Yes, sir. 20.4 west. D long कैसा होगा? Departure by D long will be 100. Yes. Departure divided by cos m hat is equal to कितना मिला? Everybody calculating? 23.59, sir. 23.6. Only a single digit missed. So you get arrived dr long. Yeah, dr I mean yesterday because it was observed long, we got EP long. It is equal to arrived dr long is equal to. ये west है, ये भी west, तो add करो. So 0 to 7 degrees, 03.6. Agreed? So ये तुम्हारा आ गया. The whole thing I'm going to copy into that, into the whiteboard now, and then delete what I don't need. Sir, DR में हमने ये सब लगाया तो DR long ही आया. हाँ, because DR long में लगाया ना. DR long से DR long, observe long से EP long. Always, when you're applying to DR, you get DR. When you're applying to observed, you get EP. And I'm copying the whole thing here once more, and I'm deleting what I just wanted to keep the question. तो ये सब नहीं चाहिए. तो arrive position मिल गया. We only want the arrive DR latch, and we want the arrive DR long. ये दोनों question मिला arrive. Now straight away we can do the problem. अभी क्या है? Intercept है. So straight you can directly plot the intercept on the arrive position because you're transferring. So ये करके when a meridian observation, ठीक है, anyway you will understand. When a meridian observation. Okay. Now we come to the main thing, which is the plotting. That to 30 ये है arrival at 36.8. So first we will put the DR position. DR position. Lamba, I'm doing lamba because we know that बाद में 30 नीचे करना है. Because we have to plot 30, no? ये हो गया तुम्हारा DR position. सर ये आप बताइए क्या बोला आपने कि नीचे करना है ऐसे? Because ये 30 है ना, मेरिडियन 30 है ना, ये तुम्हारा 36.8 है. बाद में तुमको जाके 30 भी ऐड करना है ना साउथ में, नहीं तो पेपर के बाहर जाएगा ना. Okay. That when I plot you will know 36.8 and ये है 0 to 27. अच्छा, now first thing to do is यहाँ पे intercept लगा. Intercept gave 6.4 towards azimuth. So azimuth लगाओ पहले 110 towards है 110 करके उस पे 6.5 सेंटीमीटर मार्क करो. So and then put the pier. 6.5 centimeter as per my calculation would be somewhere here. A pier. This is the 6.5 towards है ना, इसीलिए azimuth किया, ये 20 डिग्री हो गया, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर. ये लिखने की जरूरत नहीं, only for you I'm writing 6.5. When you're plotting, don't have to centimeter. That is तुम लोग को समझ में आने के लिए मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर लगा. हाँ बोलो. सर ये इंटरसेप्ट सर 30 डिग्री 15 मिनट पे लिया हुआ है ना सर, हमने जो हाँ इसे ट्रांसफर किया ना, we have transferred the position, no? अभी जैसे तुम्हारा चार्ट वर्क में क्या लगता है, चार्ट वर्क में
if you have one light here, another light here, ये light is suppose bearing, says this light is bearing suppose this much, and after half an hour you are sailing, say you are sailing like this, and half an hour this light is bearing suppose ये light bear कर रही है यहाँ पे, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम इसको ट्रांसफर करके इसको तुम ट्रांसफर कर, यू आर ड्राइंग दिस सेम थिंग, यू आर ट्रांसफरिंग, नो, ये जो पोजीशन आफ्टर द स्टीमिंग यू आर ट्रांसफरिंग द पोजीशन लाइन हियर, राइट, एंड वेयर इट मीट्स विल बी द पोजीशन. ये तुम्हारा सपोज व्हाट यू डू ऑन दिस स्टीमिंग करके यू ट्रांसफर ओवर हियर एंड वेयर इट मीट्स इज द पोजीशन. Same way here, what you're doing, you're transferring the bearing. In a running phase, you're transferring the bearing. Suppose ये steam करके तुम्हारा position आ गया यहाँ पे. Say after your steaming, you got position here. After half an hour steaming, on this course it is here. So you are simply transferring the position line to the steaming point and doing it. ये करके, तो you know that this is your position. ये तुम्हारा position है. This is what you're doing in simple chart. Even radar distance, I don't know चार्टों में कहाँ तक गया तुम? radar distances से गया है transferring position circle? अभी तक चार्ट भी नहीं खोला सर. चालू ही नहीं हुआ चार्ट. चार्ट मिल गया? हाँ मिल गया सर, उसे ही रखा हुआ, खोला नहीं. अरे वो थोड़ा ढीला है. anyway ठीक है, no mind. So ये हो गया तुम्हारा. So now same way what you're doing, see again I will draw like how I did yesterday. सर एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश. मॉर्निंग में तुम्हारा सपोज मॉर्निंग में ये तुम्हारा पोजीशन था, ये पोजीशन आ गया, एंड योर इंटरसेप्ट वाज ऐसे करके, इट वाज लाइक दिस. सो व्हाट यू डिड फ्रॉम दिस पॉइंट, सपोज यू स्टीम्ड लाइक दिस. स्टीमिंग के बाद में आफ्टर स्टीमिंग you reached here. So what you're doing now, now you have reached here. Yeah, by plane sailing you got over here. So अभी क्या कर रहे हो तुम? Your this entire intercept you are transferring over here. ये azimuth जो है ये इधर ट्रांसफर किया इस पॉइंट में, ये इंटरसेप्ट जो है वो भी यहाँ पॉइंट किया, बस हो गया, तो तुम्हारा PL मिल गया. So you are transferring the intercept and the PL after the run. That is what you do. मॉर्निंग का जो इंटरसेप्ट 30-15 का जो था, रन के बाद तुम्हारा हो गया 36.8, तो वहां पे योर ट्रांसफर. लॉन्गिट्यूड जो 20 से 40 था, रन के बाद 27 30.6 आ गया, सो योर ट्रांसफर. ठीक है ना? अब बोलो, एनी डाउट एनीबॉडी? सर ये हाँ बोलो सर. ये सेकंड ऑब्जर्वेशन का जो आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो सर, पहला इसमें, तो सर वहाँ पे आप एजिमथ कितना ले रहे हो? सेम 110 जो मॉर्निंग में था, एजिमथ 110. ये why are you taking the कि सेम एजिमथ क्यों ले रहे हो सर? देखो ट्रांसफर कर रहा है ना, you're transferring, you're only transferring the morning position, morning observation, you're only transferring to the second observation, that's all. जो azimuth रहेगा same azimuth, you're not calculating any new azimuth. You're given a morning azimuth, you apply the run and transfer it, that's all. Okay. ठीक है ना? एक तरह से ये पहला ही वाला हो गया सर. हाँ, same thing, same like yesterday's this thing. Now what I'm going to do, I am going to now draw the, अभी ये 6.8 था, अब मेरे को चाहिए 30, तो क्या करना है अभी? 6.8 का मारेंगे. हाँ 6.8 मेरे को साउथ जाना है, 6.8, एंड वहां पे मेरे को my latitude I draw. So this would be 30 degree north. ये हो गया तुम्हारा 30 degree north. 30 degree north, where this became 6.8 centimeters. ये हो गया 6.8 because it is south. Your the second position is south of the first position. अगर ये 36.8 है, मेरे को south में 6.8 लगा के I got my latitude, and where it means is the position of the ship. Remember, meridian latitude will never change because the PL itself is east-west. ये position है. Now what I have to do? I have to simply calculate my departure. ये departure है. अब देखो, as per my diagram which I am drawing on the screen, of course it may not be very accurate.
you will get better answer. I got 4.1 departure. 4.1, 4.2. Suppose I got departure 4.2 east, because it is to the east. Now I have to see what is the MLAT. MLAT between these, because it is in between these two latitudes, 6.8, so 30 degree, 03.4 आ गया MLAT. सर आपने 6.5 पे जो मार्क किया ये 20 और इसका मार्क किया ना सर 200 का लाइन. समझा नहीं क्या बोल रहे हो? सर 6.5 वाले पे आपने जो मार्क किया ना PLA. हाँ हाँ. तो सर ये परपेंडिकुलर है कि सर ये Always. 20 PL is always perpendicular, no? PL is always perpendicular. ये जो है, ये always perpendicular है ना? ये perpendicular है. So 110 का, so 020 किया ना? 4.4 आ रहा है. डिपार्चर ईस्ट कैसे? 4.4, ठीक है, very good. तो 4.4 ठीक है, 4.4 लगा देता हूँ. हाँ बोलो, और कोई डाउट? डिपार्चर ईस्ट कैसे? Because it is the east, no? This side is east, no? Always this is east and that is west. बट सर वो हमें कैसे मतलब पता कि वो मतलब Because वो तुमको तो east ही वेस्ट मिला ना. ईस्ट है ना, वो ऑब्जर्व लॉन्ग से ईस्ट है ना. हाँ, observe होने DR long से east है, इसलिए departure east हाँ है. मतलब DR लॉन्ग. हाँ, तो east here. This whenever you come to this direction, this is east. When you come to this direction, this is west. From your reference. ठीक है ना? Now we come to D long. सर. हाँ बोलो. सर अगर वो 31 होता मेरिडियन ऑब्जर्वेशन तो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देना सर. हाँ ऊपर, अगर 30 डिग्री 10 होता तो ऊपर हो जाता. ओके 30 तो मिलेगा नहीं उतना, तुमको विद इन द प्लॉटिंग रेंज ही आएगा. ओके सर. So 4.4 divided by cos 30 degree 3.4 minute आया 5.1. 5.1 east. Therefore, fixed longitude would be घटा दो 27 3.6 थे. So 27 degrees 03.6 minus 0 degrees. Better do on the calculator, don't try to do mental because then problem हो जाएगा. 2658.5. 26 degrees 58.5 minutes west, and fixed latitude remains the same. Fixed latitude 30 degree 00 minutes north. That will not change because it is a meridian latitude. Meridian latitude will never change. सर एमलेट ये दोनों लैट के बीच में 36.8 और 30 के बीच में एमलेट आ गया. सर 3.4 लिया है ना आपने. हाँ क्या बोल रहे हो? You're coming broken. Somebody can translate. मतलब सुनाई नहीं दे रहा, तुम broken आ रहे हो. Somebody वो तो उधर में, that is between the morning and the second observation. ये तो ये east plotting में ना. That is for this plot. वैल्यू बोल रहा हूँ सर 6.4 आएगा ना. ये हम लोग का 30 नॉर्थ एंड 36.8 का बीच में है ना, ये जो प्लॉटिंग है, तो इन दोनों का एमलेट लेना. वो तो दूसरा था. That was from morning to second observation. वो अभी वैलिड नहीं है. वो हो गया, एक बार हो गया तो that can be thrown out of the window. सर जो कल आपने क्वेश्चन कराया था उसमें ऑब्जर्व लॉन्ग दिया था क्वेश्चन में, तो सर उसमें फिर हम ऑब्जर्व लॉन्ग में डी लॉन्ग लगा के ईपी लॉन्ग, ईपी लॉन्ग मिला. करेक्ट. ऑब्जर्व लॉन्ग से ऑलवेज यू विल गेट ईपी लॉन्ग. मतलब जहां ऑब्जर्व लॉन्ग दिया होगा वहां पे डीआर लॉन्ग का यूज नहीं करेंगे सर, वहां ऑब्जर्व लॉन्ग में ही सीधे लगा देंगे डी लॉन्ग. हाँ करेक्ट. ऑब्जर्व लॉन्ग पे लगा दिया तो डीआर लॉन्ग भूल जाओ, डायरेक्टली ऑब्जर्व लॉन्ग पे लगा के ईपी लॉन्ग मिलेगा. चित्रेश, यू रेज योर हैंड, यू हैव एनीथिंग टू से? Sir, I forgot to lower it. अच्छा. सर हम लोग इंटरसेप्ट में ये अपना एजिमथ पे सर ये +90 -90 करके करते थे ना सर. हाँ सेम थिंग. इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन यू आर प्लॉटिंग विथ योर रूलर डायरेक्टली पुट अ परपेंडिकुलर. नो, एक ही बात है. +90 करो, पीएल लगाओ, फिर प्रोट्रैक्टर लगाओ, वो सब लंबा दौड़ हो जाता है ना. डायरेक्टली यू कैन गिव द परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दैट्स ऑल. सेम थिंग. बट सर अगर ऐसे ये इंटरसेप्ट वाली थिंग ना दी हो तब तो करना पड़ेगा ना वो PL.
Intercept में obvious any PL you draw azimuth पे any PL when you're plotting just take a perpendicular, that's all. You don't have to take plus 90 minus 90. You don't have time for all that, you know. You have to have shortcut. That is the thing. When you're plotting, simply give a perpendicular and that's all. सर आपने ये PL में सर वो मार्किंग नहीं किया? What's the PL? ये जो 30 knot. 30 knots is a latitude. No, you did not mark it as a PL. You can mark if you want, but not required. Any other doubt, anybody? Okay, now that means you all have understood. We can go to the next question. Now let us see another simple question, and after the break we will go to more complicated question. ये staggered का बहुत different types of questions है. I'm trying to take a simple one so that hello बढ़ाना है pressure. सर स्टैगर्ड का कोई भी आएगा तो सीधा परपेंडिकुलर डाल के ही ड्रॉ कर देंगे. We have to see what is the question then, no? है ना? Question देखो, as per the question you have to give that. This या वापस वही 30 degree नॉट वो बड़ा अभी जो क्या बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन. ओके दिस वन. अभी ये जो ये वाला वेरिएंट है ये LBC और मरपास वाला ना सर इसमें. हाँ अभी देखो अभी जो आ रहा है ये थोड़ा डिफरेंट है. Now let me do this. Don't worry, I will do all the types so that once you have your notes later on also, आराम से तुम कर सकते. ये हो गया. Let's do this one. ये अभी देखो. These are two intercepts. ओ अच्छा ये तो वही है. ये तो किया हम लोग है ना. ये तो ये हो गया. Sorry. ये तो हम लोग ऑलरेडी कर दिया. I'm removing this. हाँ नहीं ठीक है. That's because I was trying to copy first, then I would have shown. 1 minute. What I gave just now was what we have done yesterday. So let me go back and select. What I'm trying to do is select so that you can do, you know, at your pace. Not that suddenly a difficult aa gaya, फिर easy aa gaya. Because when you do the question, that's why right now don't do from the MMD question. Yeah, 30. Clear position. Yeah, ये ठीक है. Okay, now it is first a lat by meridian altitude, then intercept. This will be a reverse. I'll just copy this and I'm going to share with you now. This will be the reverse of what we have done till now. Yeah. Now I'm going to share and you can copy it. You share worksheet. अभी देखो 1200 hours का मेरे lat by meridian altitude मिल गया. Then course is given. Course is 210 into distance 30 mile. On completion, intercept was 330 using DR position 21. Here you have to get your concept very clear. First observation को transfer करो by plain sailing method to the second observation. That is all that you do. Find was the initial and final position. इसमें पहले we seen earlier an morning observation followed by lat by meridian altitude. यहाँ पे lat by meridian altitude देके followed by this thing because morning में लेना भूल गया. तो कैप्टन पूछा सेकंड ऑफिसर क्या लिया? बोले सर वो तो थर्ड में तो मेरे को बुलाया नहीं, मॉर्निंग तो लिया नहीं. ठीक है अभी तो मेरिडियन ऑल्टीट्यूड ले लो और करीब 4:30 बजे एक और ले लो स्टीमिंग के बाद एंड देन गेट द पोजीशन. दैट आल्सो पॉसिबल. ये तो इंटरसेप्ट ऑफ द सन. नो, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इसमें सेम थिंग. लेट मी नो व्हेन यू फिनिश राइटिंग देन आई विल. अगर ये दिन में पहले मेरिडियन ऑल्टीट्यूड ले लिया फिर बाद में लॉन्ग बाय कौन नहीं ले सकते, इंटरसेप्ट ही लेना पड़ेगा. नहीं लॉन्ग बाय कौन ले सकता है. बट योर एमएमडी एग्जाम यूजुअली दे वांट टू मेक इट, दे डोंट वांट टू मेक इट वेरी इजी.
So they want you to plot intercept also. You can do long background also. Either way you can do. There are various now more permutation combination will come. Things will now start heating up after some time. अभी हम लोग हल्लू जा रहे हैं. Enough time is there. Let me know when you finish writing them. Okay, done. So find arrived position after steaming. So same thing you delete after steaming course. Course will be south 30 west into 30 nautical miles. So the same thing. Delete is equal to cos course into distance is equal to cos 30 into 30. That way they make it confusing, you know. 30, 30, so you'll be wondering. Sub 30 है. Position भी 30 है. Longitude भी 30, 30 है. Cos 30 into 30. कितना मिला? 25.9 sir, 25.98. नहीं, 26 हो गया ना. 9 है मतलब 26 हो गया ना. 26 minutes. 26 sir. Yeah. Then departure. अच्छा नहीं, इसमें सीधा arrived latitude would be 26 south है. वहाँ 2030 south था. Arrived latitude हो गया 2056 south. Correct? South. mlat हो गया. ये दोनों के बीच में देखो mlat कितना है. So तुम्हारा 26 का है 13. So 2043 is it correct? mlat ठीक है? Yes, sir. Now we come to departure. Departure is equal to sine cos into distance is equal to sine 30 into 30 is equal to. अभी देखो sine 30 into 30 कितना है? 15. 15 सीधा is equal to 15 minutes. 15 minutes. Yeah, west है. Course is west. West. D long is equal to 15 divided by cos mlat 20 degree 43 minutes. So 16.0. 16.0 minutes. West. West. Arrived longitude will be equal to इसमें नहीं चाहिए. Why D long is not required? Longitude नहीं दिया है starting में. हाँ, so you cannot apply. So इसको अगर तुम पहले पढ़ लेता तो ये नहीं चाहिए. So directly you have to put the D lat on the longitude itself. So now let us go to the whiteboard and because there is no longitude given, so directly you can give. अभिनव तुम्हारा ऑडियो में बड़ा प्रॉब्लम है. I'm not able to hear you at all. Since the DR longitude is not given, so there is no question of putting anything. So directly we have to plot and put the arrived latitude. That's all. ये mlat भी नहीं चाहिए. ये पूरा नहीं चाहिए. Why? Because we don't have any longitude to apply the D long to.
So on the latitude itself, because the meridian latitude, no, so directly you can do. So now directly ये जो dr है इसको प्लॉट करो, ये और भी आसान है, इसको प्लॉट करो 21 30 30 पहले इनिशियल वाला प्लॉट करेंगे सर 20 डिग्री 30 मिनट्स वाला। जो dr है वो पहले प्लॉट द dr फर्स्ट। ये dr हो गया, ये हो गया तुम्हारा 21 साउथ 2100 साउथ, ये हो गया 30 30 वेस्ट 30 30 वेस्ट। यहाँ पे तुम इंटरसेप्ट लगाओ, आई थिंक यू कैन पुट इंटरसेप्ट फर्स्ट, यू कैन पुट मेरिडियन ऑल्टीट्यूड फर्स्ट। अगर इंटरसेप्ट लगाया 330 है, अवे है, सो 330 इधर होगा एंड 330 मतलब ऐसा होगा। 330 would be something like this and 4 away, because 330 से मैंने away कर दिया, so 4 centimeter away करके I will put my PL as a perpendicular। तो मैंने 4 centimeter लिया यहाँ पे, 4 centimeter, ये actually थोड़ा बोर्ड से बाहर जाए शायद, ऐसे नहीं बाहर नहीं, अंदर ही रहे, ऐसे लिए। नाउ ये मेरा PL मिल गया। नाउ आई हैव टू ड्रॉ 2056 साउथ, मतलब ऊपर 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर 4 सेंटीमीटर लगा के इसको थोड़ा बढ़ाना। अभी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लगा के डायरेक्टली आई कैन ड्रॉ द लैटिट्यूड। 4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ आ गया, यहाँ आके डायरेक्टली ड्रॉ द latitude। So where this is the meridian latitude, because this is the actually this won't be arrived latitude, this would be the EP latitude, because observed, na, this would be the EP latitude or meridian latitude also you can say, EP latitude। So latitude remain the same because PL is east west, so this is the position। तो 330 दिया था ना, ये 330 away है ना, 330 away है ना, so reverse direction में ना। ओके, So now I got my departure as this। Latitude will be the same, only the departure is required। ये हो गया मेरा departure। ये when I measure this, you can tell me how much it is, I will tell you how much I got। I got as 9.4। तुम लोग कितना मिला departure? Departure कितना मिला? Again east। सर ये ऊपर वाला ऐसा समझा दीजिए प्लीज। क्या बोल रहे हो? ऊपर है ना, सर, ये साउथ जो- 20 साउथ है ना, तो ऊपर में 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लगा है, because between 21 and 2050 is 4 minutes, no, and scale is 1:1 or whatever scale you use। ओके सर, थैंक यू। सर ये इनिशियल जो दिया है 20 डिग्री 30 मिनट्स, ये क्या है सर? फिर वो मेरिडियन लैटिट्यूड था, उसमें मैंने रन लगा के मैंने ईपी लैटिट्यूड मिल गया ना। सर कौन सा है लैटिट्यूड? ईपी लैटिट्यूड जो मैंने लिखा है आफ्टर अप्लाइंग द रन, सो दैट इज नहीं, एक्चुअली सर। ऑब्जर्व लैटिट्यूड ओनली ना। इनिशियल जो है 20.30 डिग्री था, ये आपका ऑब्जर्व लैटिट्यूड था। दैट वाज ऑब्जर्व लैटिट्यूड, उसको मैंने रन लगा के ईपी ऑफ मेरिडियन लैटिट्यूड है। So that is the main, once I got a meridian latitude I can transfer it, so my mistake will be only depending on what current and wind, otherwise I'll get a perfect position। सर ये कैसे पता चलेगा कि वो डीआर लैटिट्यूड है कि ईपी है कि ऑब्जर्व? लिखा है ना, लैड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। सी द क्वेश्चन ना, लैड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड मतलब ऑब्जर्व लैटिट्यूड हो गया ना। ऑब्जर्व लैटिट्यूड में तुम लगाओगे तो ये करेगी ईपी लैटिट्यूड, ठीक है ना। नाउ वी कम टू डिलो। सर हाँ बोलो। सर अगर इसकी जगह हमने उल्टा लिख दिया तो कितने मार्क्स कटेंगे सर? उल्टा मतलब कैसे?
उधर DR लिख दिया फिर। लिख दिया तो ठीक है, 2-3 मार्क, एज लॉन्ग एज प्लॉटिंग इज ऑलरेडी नॉट। तुम लोग को डिपार्चर कितना मिला? हाउ मच यू गॉट द डिपार्चर? 9.4 मिला कि कुछ और मिला? हम आ रहे हैं 7 आ रहा है कुछ। 7 और एनीबडी एल्स? तो 12 जा रहा है इधर तो। 12 जा रहा है, किसी को 7 के बहुत ज्यादा वेरिएशन। तो somebody, both of you are making mistake. और किसी का 14 आ रहा है सर। कितना? 14 सर, 14। अरे ये क्या हो गया? और भी कपड़ा हो गया। Somebody else? Any plotting you do? देख रहा हूँ। हाँ, ठीक से करो। Give me some more input, then I will take the mean. अभी तक मेरा ठीक ही लग रहा है, किसी को 7 आ रहा है तो किसी का 12 आ रहा है तो किसी को 14 आ रहा है। नाइन आ रहा है सर। नहीं है ना, तो we will give it 9.4 only. So 9.4 मेरा 14.5 आ रहा सर। कुछ गड़बड़ है, सम गड़बड़ में भी दे। सर फिर चेक किया सर स्केल से 13 के आसपास ही आ रहा है सर। तो वापस चेक किया सर, 14.5 आ रहा है सर। 14.5। ये तुम लोग कितना लिया? ये इंटरसेप्ट कितना लिया? ये 4 लिया ना? यस Yes, सर 4 लिया सर। स्केल से ही सर वही आ रहा है जनरल। अच्छा अच्छा, मैं because I have not taken protractor, no, so maybe it may be more like this, 9 आ रहा है। और भी ऐसा होगा 30 डिग्री, पर फिर भी सर 150 होगा ना, ये जो अजमत बनाएंगे 150 का होगा। 150 होगा, तो और भी ऐसा आ गया। हो सकता है, करेक्ट, 13-14 हो सकता है, because I have taken, my angles are very vague, no, I am not using protractor, ऐसे हो गया, ठीक है। So I will keep it as 14. When let me keep it as 14, assuming that people are majority wins always. 14 minutes east, तो d long हो गया 14 divided by cos m lat. m lat कितना हुआ? how much m lat? ये दोनों का बीच में ना, m lat 20 degree 58 minutes. Wherever you're plotting in between the two is m lat. तो d long हो गया, सर साउथ होगा ना सर? हाँ सॉरी साउथ। So d long हो गया 14 divided by cos 20 degree 58 minutes 15 minutes east, therefore fixed longitude हो गया, fixed longitude हो गया, ये था 30 degree 15 minutes west, and fixed latitude हो गया same thing 20 degree 56 minutes north. ये हो गया आंसर, that's all. तो सर अभी इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन पूछा ना? हाँ, अभी वर्क बैक कर रहे हैं, करेक्ट। नाउ टू फाइंड इसमें हमने जो ये initial position, apply reverse run on final position. So reverse run में कोर्स कितना होगा? That was course was south 210, south 30 west था, so it will be north 30 east. Just change both the quadrant, that's all. North 30 east into 30 minutes.
तो सर यही जो फाइनल वैल्यू है उसी में सारा वो लगा देंगे तो आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट डीलाइट वगैरह लगा के। करेक्ट। तो इसमें डीलैट इज इक्वल टू cos into distance is equal to cos 30 into 30, same thing. So 26 minutes ये नॉर्थ आएगा. So initial latitude would be initial latitude 2056 में 26 लगा दो, घटा दो. ये latitude was latitude will be the same, no? There no need to find out. Initial latitude already given, no, is equal to 20 degree 30 minutes. वो same ही मिलता तुमको north. Then departure is equal to sine cos into distance is equal to sine 30 into 30, 15 आ गया. 15 minutes east. सर इनिशियल लैटिट्यूड साउथ है सर. साउथ है. D long is equal to अब अच्छा अभी एमलेट चाहिए तुमको. पहले यहाँ पे इनिशियल लैटिट्यूड करके एमलेट इज इक्वल टू 30 and 56 के बीच में. सो वही 43 आ गया. 2043 साउथ divided by cos 2043. So you got 60. D long is equal to 16 minutes east. So initial longitude would be east को इसके से ये कर दो. तुम्हारा जो longitude था यहाँ पे वहां से निकाल दो. ये longitude कितना मिला था? सर 30 लाइट जो फाइनल आया वो साउथ में होगा ना सर? 20 डिग्री 50. हाँ वो मेरा तो गड़बड़ हो गया. हर जगह है रोड साउथ. ये साउथ. D long 15 degree east. तो फिक्स लॉन्गिट्यूड 30-15 मिला बिकॉज योर DR लॉन्गिट्यूड में 30-30 तो वो मिल गया. सो तुम्हारा फिक्स लैटिट्यूड तुमको ऑलरेडी मिल गया बिकॉज यू हैव टेकन बाय मेरे पास यू गॉट EP लॉन्गिट्यूड EP लैटिट्यूड 2056 ये आ गया. नाउ यू वांट टू फाइंड द इनिशियल पोजीशन. तो रिवर्स रन में तुम्हारे लैटिट्यूड का जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट ऑब्जर्व लैटिट्यूड दैट विल बी द सेम ओनली. इवन यू अप्लाई रन सेम थिंग यू विल गेट बिकॉज वहां से तुमको 2056 मिला ना. So instead of that directly you can see initial lat is 2030 south. That is given. MLAT हो गया 2053. Why? Because तुमको 2056 से you want to go, no? So what you're doing actually, you are now going reverse run like this. You are going a reverse run like this. ऐसा reverse run करके तुम अपना position ले रहे हो. So ये तो हम पहले भी कर चुके थे अपर स्टेप में सर. स्टार्टिंग पहले करने की जरूरत नहीं था. हम लोग एक्स्ट्रा किया था. अभी करना है. अच्छा पहले जरूरत नहीं बिकॉज फर्स्ट यू ओनली वांट बिकॉज एनीवे ओनली लैटिट्यूड वाज टू बी ट्रांसफर्ड. नो नाउ यू हैव टू डू इन द रिवर्स मेथड. सर इसमें जो हमने पोजीशन लाइन ड्रॉ करी है ये जो अभी सेकंड स्टेप में, ये तो सर पहले तो क्वेश्चन में दिया नहीं है सर एजिमुथ. तो ये हमने बाद वाले से स्टार्ट किया है क्या? हाँ एजिमुथ 330 वही तो किया ना. 330 लगा के उसका PL लगा दिया. ये जैसे हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी एक PL दिया रहता था, मतलब फर्स्ट पोजीशन में भी एक PL, तो उसको ट्रांसफर क्वेश्चन में डिफर. नो ये तो पहले मेरिडियन ऑल्टीट्यूड दिया ना. सो PL वाज ईस्ट वेस्ट. दैट वे यू पुट ईस्ट वेस्ट हियर. बट यहाँ पे एजिमुथ दूसरा दिया हुआ है. ओके सर. सो इनिशियल लॉन्गिट्यूड वुड बी 29 डिग्री 59 मिनट वेस्ट. करेक्ट. 29 डिग्री 59 वेस्ट. ये हो गया तुम्हारा आंसर. That is all. Yeah, because you have to find the initial position. They made it the plotting easy, but यहाँ बीच में initial and final दे दिया. सर तीन ही कंडीशन है ना सर? एक दो LBC से दे देंगे, नहीं तो LBC इंटरसेप्ट और LBC हमारे पास या इंटरसेप्ट हमारे पास. हाँ यही सब इंटरसेप्ट LBC हमारे पास. ये प्लस ऑफ कोर्स और भी है
अभी current आएगा. After break, when we come back, we will do one current problem. So I will leave this as it is. We will take a break, come back at 10 o'clock, and meanwhile I'll select one more question and keep little different time. अभी simple वाला खत्म हो गया. Recording stopped. Can you all hear me? Yes, sir. Now देखो वो साउथ वेस्ट था, उसका रिवर्स है, तो रिवर्स कितना होगा? अबे मैंने रिवर्स जाना है तो कोई नहीं, उल्टा इनिशियल पोजीशन फाइंड करना है ना. Now I will give you another one. डिपार्चर वेस्ट का भी करवा दो सर. डिपार्चर वेस्ट, बिकॉज कौन सा डिपार्चर वेस्ट? सर कोई प्रॉब्लम करवा दो जिसमें वेस्ट की तरफ ये सब आए. जो प्रॉब्लम मिल रहा है वही कर रहा ना, कोई कहीं ना कहीं आएगा. यस सर. Let us continue with the next type of question. Yeah, here we are. So it's 178, the next step here. इस वाले में जो आपने एमलेट लगाया है वो ईपी लेट और ओरिजिनल वाले लेट के बीच में लगाया है ना? हाँ, प्लॉटिंग का जो लेट है, whatever lat we use for plotting, those lats. Now I'll give you another type of question. ये वाला. Now I'm copying this here, and we will go to the worksheet, and we will see that question. Okay, अब ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, न्यू शेयर वर्कशीट. अब ये क्वेश्चन हम लोग मेरिडियन लिया, अब ये एक्स मेरिडियन. क्वेश्चन लिखो. इसमें ये एक्स मेरिडियन का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट गिविंग अ पीएल, दैट्स ऑल. डोंट से दैट सर हम लोग एक्स मेरिडियन किया नहीं, डजंट मैटर. मेरिडियन मिस हो गया तो एक्स मेरिडियन कर लिया. सपोज यू वेंट ऑन द ब्रिज एंड फाउंड द मेरिडियन पैसेज टाइम हो गया, बिकॉज यू वेंट लेट, तुम थोड़ा 5 मिनट ज्यादा सो लिया, so you went on the bridge little late. Once you went on the bridge late, you found that the meridian passage is over, so you are doing the x meridian. Now let me ask, people are not talking, whether they have understood. Satyam Pandey, you're okay? Are you there? Yes, sir. Okay, understanding. Then we come to Soham Sood. Are you there? यस सर, यस सर. समझ में आ रहा है? हाँ जी. Swetang Jain. Sir. Understanding. Sir. Alam. यस सर. समझ में आ गया? यस सर. अर्शित. यस सर, थोड़ा आ रहा है समझ. थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो ठीक है. सचिन चौबे. यस सर. Martin, are you there? यस सर. Understanding? यस सर. अंडरस्टैंड. Subhashish. यस सर. So I was just asking the guys who are keeping quiet. यस सर. Okay, good. Shetty, are you there? Yes, sir. Okay, understood? Yes, sir. Shoaib Ali? यस सर. Right. So here simply, this is not an X-meridian problem. So now what we do? Sir, let us write. हाँ, लिखो, लिखने के बाद लिखो.
Let me know when it's done, then I will explain to you what is to be done. एक्स मेरिडियन होता क्या है सर मतलब नॉर्मली? एक्स मेरिडियन मतलब मेरिडियन मिस हो गया, so you're taking an एक्स मेरिडियन. ये मेरिडियन ऑल्टीट्यूड और हमारे पास एक ही चीज होती है सर. हाँ मेरिडियन मेरे पास सेम. Finish writing? Okay, well, let me explain what it is. X meridian observation is taken when it was not possible to take meridian passage observation due to cloudy weather. Yes, I'm only for your this thing, understanding of it, mistiming, etc. We will see how to do explain later. Just in this case, we apply run to the observe lat stroke dr long to get arrived EP lat and dr long. Then plot as usual. That's all. So what you're doing, if you're applying the run to the observe lat, in this, since one more thing you write, since more than one course we can do by days work. You have done days work in chat work? Yes, sir. Very good. Kuch to kiya. So I don't know what method you have done. For me, the method is very simple in days work. You write the course, you write the distance. Course is the quadrantal course, mind you, not the actual course. You have to write what is the quadrantal course? The 2-digit course, not the 3-digit course. Then you find the delat and you find the departure. That's all. So here the number 1 first course was 87 miles 000. So north 0 east. Either way, because you need this thing, no? In the distance is 87. In the everything will be delat only. So you know that this will be delat and departure would be 0 because you are steaming 000. Then second is there is no need to write it, no need to calculate. Directly you can know. But just I'm writing days work because it is simpler and you won't make a mistake. This will be north 90 west. Sorry, distance is here. Correct. Distance here is 101. 10. So delat will be 0 because it is going on a westerly course only. All will be departure. Departure will be 10. So total delat is 87 and departure is 10. Therefore, you have arrived observed lat would be 101 means 1 degree 27 minutes. So 37, this would now sign is required here. This would be east. So here in fact you can write east and beach means this would be delat would be north. This would be north. This would be west and this would be west, obviously. So here you can write in degrees and minutes so that later
later on you won't have any problem. You can say that 1 degree, 27 north. This would be 1 degree, 41 west. So arrived. हाँ बोलो. सेकंड वाला जो स्टेटमेंट लिखा ना सर आपने, इन दिस केस भी ये वाला सर समझा दीजिएगा. We are applying run. No, तुम्हारे एक observe latitude है. उसमें like how you did before, no? Initial observe lat and dr long में run लगा के EP lat and dr long मिल गया. Only to this x meridian latitude. That's all. उसमें dr long नहीं दिया था सर इसके पहले वाले में. पहले में dr long नहीं दिया था, but यहाँ पे dr long दिया. I told you no, where longitude not given. Directly plot of the longitude. रन लगाएंगे तो dr long से dr long ही मिलेगा, लेकिन ऑब्जर्व लैट से ep लैट मिल जाता है. Correct. That is all. So arrived observed lat. You can write arrived observed lat also, or you can write arrived observed EP lat also. It doesn't matter. इसमें कुछ होता नहीं है. As long as you know what you're doing, that's all. So 127, you got the observed lat was 37. So now 30 to 48 you can ignore because observed lat मिल गया. 37 degree minus it was 1 degree 27. 1 degree 27 minutes. So you got 35, 33. 35, 33 south. Because from south you're going north, no? ये मिला. Now you get MLAT. MLAT 35, 33 and 37 का बीच में देखो. 37 degree plus 35 degree 33 minutes divided by 2. 36, 16.5. 36 degree 16.5 south. MLAT मिल गया. Then departure D long is equal to departure, you already know, departure upon cos MLAT is equal to departure is 1 degree 14. So directly ये departure को लिखने की जरूरत नहीं है. In fact, departure you can leave it as departure itself 101. Only DLAT को मैंने किया because that is in degrees. But departure you have to find out, no? So 101 divided by cos 36 degree 16.5 minutes. I got 125.3 is equal to 125.3 west. Now you can write is equal to 2 degrees 05.3 west. Therefore, डिपार्चर को लिखने की जरूरत नहीं है. डिपार्चर को डिग्री में लिखने की जरूरत नहीं है. Directly you can do in minutes only, no? Because ultimately you're here you're converting, no, later. 125 मिला तो. So you get fixed longitude, नहीं, arrived longitude would be 110 37 east, 110 degree 37 east minus 2 degree 5.3 minutes, 108 31.7, 108 degrees 31.7 west. ये आ गया तुम्हारा. सर ये आपने MLAT, ये EP lat और स्टार्टिंग DR lat के बीच में लिया है ना सर? हाँ, both the lats between which you're calculating, no? 36 10.5 साउथ आ रहा है. कैसे? 37 observe lat. and observe lat, no. Observe lat 37 Observe and 35 33. So the whole thing I'm copying on the whiteboard and I'm deleting what I don't need over there. Let me take this now to the whiteboard, copy it. Just give me a moment. Let me delete what I don't need. Then you will see what we need. Because we need the question, no question to karna. 1 minute. ये सब इसको सब निकालने दो, ये सब नहीं चाहिए. ये सब नहीं चाहिए. See the I need arrived observed lat and arrived long. That's all. Now I can do the plotting straight away. सर ये arrived long east आएगा ना? Arrived long, east आएगा, correct. Your minus, no, that was west, no, so it will be east. East.
अरे अरे लैटरल तो हमने निकाल दिए, कहाँ गया? 1 मिनट, इसको निकालने दो। अरेबलेट साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया ईस्ट। Right. So now you got this thing. You can put the, let us put the arrived lat long, because the intercept was work from earlier observed latitude. So you have to put that only. अगर दूसरा कोई DR होता तो then we would have put, that would have been even bigger झमेला. So now let us draw that. Do the plotting. Now your PL already given. This is the 35, 33. This is 30. This is 108, 31.7 east. This was 35, 33 south. Then we have here here 100 to 80. So 100 to 80 mila. Second one was 7 away from 086. So now you get 1 minute. तो उसको लंबा कर दिया, so I don't know where it's going to meet. So now on the same position, because the same observed lat से ही दिया है, intercept 086 degrees and 7.2 away. तो 086 मिला यहाँ से, 086 away कर दिया. It is only 4 degrees, no, it will be very close to it. Away करके 7.2 centimeter लगाया and put the PL. 7.2 and put the PL. Where this is the perpendicular to the azimuth. ये तो दिखाने की जरूरत नहीं, just draw directly. And this is the position. So now I can pull this forward to draw the so I know that this is the D-lat and that is the D-lat. Okay. So I get this is the D-lat and this is the D-long. A departure. सर ये 086 वाला आपने कहाँ मार्क किया सर? यहाँ पे पोजीशन में 086 अवे किया. 086 अवे था ना, 7.2 अवे, and then I put 7.2 centimeter over here. ये हो गया 7.2 centimeter. सर जब एक मेरिडियन पैसेज वाला रहता है तो ये डिलैट की जरूरत नहीं पड़ती ना सर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम निकाल चुके रहते हैं. नहीं, एक्स मेरिडियन में चाहिए बिकॉज़ पीएल दिया हुआ ना. पीएल दिया सर इसलिए. सो एक छोटा सा डीलैट मिलेगा. सो नाउ सपोज देखो कितना मिला तुमको डीलैट. मेरे को तो मिला है ऑलमोस्ट 0.9, 0.9 एंड ये मिला है 7.4. देखो तुम लोग कितना मिला. सर एक बार पोजीशन लाइन के बाद दोबारा बता दो सर. एक मिनट. कौन सा पोजीशन लाइन? सर 100 to 80 के बाद से. 100 to 80 के बाद में, because the intercept was obtained from working earlier observed latitude, that means 35, 33 and 108, 37, same DR used. वहां पे intercept लगा लो. 086 था, वो away हो गया, so it become this side, because towards only east side में आता, the northeast quadrant. Now it became the southwest quadrant. So 08 से लगा के उसी लाइन पे 7.2 measure करके उसका perpendicular draw किया, which is the PL. Where the two PLs meet is the
position of the ship. Then you measure the delat, measure the departure, that's all. सर ये जो फर्स्ट पीएल है सर वो तो फर्स्ट ऑब्जर्व लैटिट्यूड पे दिया सर, तो इसको हम लोग सेकंड ऑब्जर्वेशन पे क्यों लिए सर 100 और 280? हाँ, because given है ना PL, because given PL, no, because x meridian, no, meridian होता तो ठीक है, नहीं तो होता same होता, it would have been 35, 33 only, but here it is x meridian got a PL, x meridian not a meridian latitude. मतलब ये वाली पीएल हम ट्रांसफर किए होंगे ना, वो वाली पीएल है। Always, every PL you're transferring, you know. At any stage, first observation का PL, you're simply finding the arrive position and transferring the PL. That's all. Either be same thing, nothing new. आई बोलो डिलैट कितना मिला? सर डिपार्चर 7.4 आ रहा है, डिलैट 1.4 आ रहा है। 1.4. Anybody else? डिपार्चर 2 है सर, डिलैट 2 है सर। 2 बहुत ज्यादा है, 2 नहीं हो सकता। डिपार्चर ठीक है 7.4। तो तुम्हारा 2 ज्यादा है, देखो जरा तुम्हारा एंगल ठीक से देखो, 086 and 100। एक मिनट नहीं सर 1.5 है, ठीक है डिलैट 1.5 है। Anybody else? Give me a third opinion. सर 0.7 आ रहा है। ले लो, अभी और भी कॉम्प्लिकेशन हो गया। 1.4 किसी को मिल रहा है? 1.2। 1 point. So we'll take mean. That is 1 point. चलो. It all depends, you know, but your angles must be correct. Angle में mistake मत करो। जो 90 वाली लाइन बनाएंगे, मतलब पोजीशन लाइन, सर इसको उससे मेजर करके बनाना पड़ेगा ना सर, ये रफली ऐसे बना सकते हैं? रफली क्यों? Obviously perpendicular में मेजर तो करेगा ना तुम्हारा रूलर से। You will be doing with this thing, no? अगर तुम्हारे पास रूलर नहीं है, 2 गलत है, 2 नहीं हो सकता। I can accept up to 1.2, 1.3, even 1.4. उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। And you will have either a plotting के लिए you will buy that, मिलता है ना एक roller, not a parallel roller, a roller ruler. समझ आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये सर एक नॉर्मल स्केल होगा, उसके नीचे एक रोलर होगा। हाँ, वो करीब 30-40 रुपए में मिलता है। सर मेरे पास है। हाँ, तो उसमें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत आसान है। सर सेट स्क्वायर की बात कर रहे हो सर? सेट स्क्वायर से भी कर सकता है। नहीं, एक रूलर होता है जिसमें एक नॉर्मल रूलर के नीचे में एक रोलर है। दैट इज कॉल्ड रोलर रूलर। चलो, assuming it is 1.2, let us carry on. Then fixed latitude will be, ये north है, 35, 33 है, so 35, 31.8 south, mlat, ये दोनों के बीच में तो 0.6 ऐड करो, that is all 35, 32.4 south. T-long, you know, departure by cos mlat, वो देखो 7.4 divided by cos 35 degree, 32.4 means 9.1 minute west, and fixed longitude तुम्हारा 131 पॉइंट से 9.1 सब्ट्रैक्ट करो, सो कितना मिला? 1.4 के आसपास आ रहा है। 1.4। हाँ ठीक है, तो मैंने 1.2 अंदाज से लिया है, दैट डजंट मैटर। 108 22.6 करेक्ट? यस सर 22.6 ईस्ट हो गया। अब बोलो डाउट किसको है? सर डायग्राम बता दो। डायग्राम वही है, तुम्हारा मॉर्निंग का ट्रांसफर पोजीशन डाल दिया,
बिकॉज ऑब्जर्व लेट से लिया है, वो डाल के उसमें पीएल लगा दिया 100 to 280, देन वहां पे इंटरसेप्ट दैट इज 0 इज अवे है तो इस साइड आएगा, अवे बनाया, उसके ऊपर 7.2 सेंटीमीटर मार्क किया और परपेंडिकुलर लगाया पीएल, वेयर द टू पीएल्स मीट इज द पोजीशन ऑफ द शिप। बोलो, who else having doubt? Doubt must be always clear. Don't go with doubt. डाउट ही नहीं सुना सर, कभी कभी डीआर लॉन्ग पे ड्रॉ कर रहे हैं सर, कभी ऑब्जर्व पे डीआर लेट पे कर, ये सब नहीं आ रहा सर। इसीलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है ना। यू मस्ट ऑलवेज गो एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन जो पूछता है उसी तब ना नंबर मिलेगा। तुम अपना ट्रैक पे लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। गो फॉर द क्वेश्चन, लिखा है ऑब्जर्व लैट है तो ऑब्जर्व लैट, डीआर लैट है तो डीआर लैट, ऐसा और भी है। वी विल सी मोर क्वेश्चंस नाउ। सर डिपार्चर 7.8 आ रहा है। 7.8, हाँ ठीक है, दैट्स ओके, एक्सेप्टेड, नॉट अ प्रॉब्लम। सर ये हम लोग सर एग्जाम में कितना का एरर चलेगा सर? 2-3 चलेगा। हाँ बोलो, एनीबॉडी एल्स हैविंग डाउट? सर ये सर एग्जाम में कितना का एरर चलेगा सर? बोले ना 2-3, 0.23 इज ओके। ओके, अब बोलो, एनीबॉडी एल्स? हाँ सर ये हम लोग ने क्या बोलते हैं सर, ये डीआर लॉन्गिट्यूड पे लगाया और ये अराइव लॉन्गिट्यूड लगाया, और हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व लैटिट्यूड पे लगा के अराइव। बिकॉज़ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से लेना है, ऑब्जर्व लैट क्वेश्चन में है ना। हाँ सर, लेकिन वो दोनों में करने पे फिक्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही लिखा हमने सर। ये तो ऑब्जर्व लैटिट्यूड हुआ, ये अराइव लॉन्गिट्यूड हुआ सर। हाँ तो फिक्स लिखा ना, फिक्स्ड, वो तो पहले ईपी था, प्लॉटिंग के बाद फिक्स हो गया। सर एक बार सर ये एक बार डायग्राम आप इरेज करके वापस से एक बार बोल दोगे, जस्ट ओवरव्यू एक। यू हैव टेकन द, ये मिला तुमको, you have got this one observed EP lat because this is the observed latitude and you got the arrival longitude, वो तुमको मिल गया, वो लगा के वहां पे तुम्हारा PL दिया हुआ है 100 to 80, PL उस पे डाल दिया because it is set from earlier observed lat, तो वहीं पे लगा दिया, लगा के तुम तो इंटरसेप्ट दिया है 086 अवे दिया हुआ है, अवे तो 086 ड्रॉ करके अवे में करो, ऑपोजिट क्वाड्रेंट करके वहां पे 7.2 सेंटीमीटर मार्क करो, मार्क करके परपेंडिकुलर लगाओ, where the two PL meet is the position of the ship, वहां से D-lat मेजर करो, डिपार्चर मेजर करो, D-lat मिल गया, D-lat से तुम्हारा फिक्स लैटिट्यूड मिल गया, M-lat मिल गया, between these two latitude, this latitude and this latitude where you are plotting, M-lat मिला, डिपार्चर से D-long मिला, अप्लाई किया, फिक्स लैटिट्यूड मिल गया, ठीक है ना। Now let us look at another question. A question लिखो, I will show you how to do, you will have to do and tell me later. इसमें एक और है, इसमें करंट भी दिया, we already know how to do the day's work, no? Question लिखो, then I will show you how to do and then you do it, and tomorrow and Saturday, अच्छा Saturday I was thinking 10 o'clock नहीं करके 9:30 करेंगे, then you will get the attendance also, no? समझे ना, समझ आ गया? यस सर। सर वो व्हाइट बोर्ड दिखा दीजिए। व्हाइट बोर्ड का कहानी तो खत्म हो गया सर, एक बार दिखा दीजिए। एक हो गया तो बोल दो। थैंक यू। इसमें I will give you the procedure and you do it. It is the same thing. हाँ, लिखो, लिखने के बाद तुम लोग होमवर्क में करो and you tell me on Saturday 9:30 we will meet. So you can log in before 9:30. Remember 9:30 के बाद में तुम्हारा लॉग इन होगा नहीं, तो 9:20 में लॉग करो, तो तुम लोग जब हो तो तुम अटेंडेंस भी मिल जाएगा तुमको। 9 बजे कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। हाँ तो 9 बजे करो ना, करके बैठ जाओ, मैं 9:30 आता हूँ। सैटरडे है ना, थोड़ा रिलैक्स मूड में मॉर्निंग, समझे ना। तुम लोग लॉग इन करके अपना दूसरा काम करो, 9:30 शार्प आए, 9:30 to 10:30।
So earlier what we did was X meridian was given. X meridian is not a meridian latitude. In meridian latitude, PL is east-west. So directly the latitude will not change. But in X meridian, there was the PL given, that is 100 to 80. Therefore, you have to plot that also. But here it is a normal question, but only thing current is given. So you have to know boxing the compass and see west, southwest kitna hai. That is only catch here. Let me know when you're finished so that I can tell you this thing and release you within time. साउथ वेस्ट और वेस्ट का आधा होगा ना सर वेस्ट? हाँ करेक्ट करेक्ट सर मतलब प्लस 22.5 कर देंगे साउथ वेस्ट से. यस. So let me know when you're finished. Then done. Yes, sir. Okay. So here, if you see that you have to do the day's work method because there are more than one. So number one, find arrived position by applying run to the DR position. Hello, good morning. That was call from MMD. Anyway, find arrived position by applying run to 1600 DR by day's work. Day's work. Plot this position and on this plot the 1600 intercept stroke PL as well as the 1930 intercept stroke PL. That's all. Find fix. So the main catch here is that you only have to do by the day's work. That means what would be this one? If I say course distance delat departure, what would be the first course? That is ship steered 310. So it will be north 50 west, and what will be the distance? At 13 knots. So kitna gaya? 13 into 3.5. How much? So 45.5. 45. Second would be, what would be the second course? West southwest. That means southwest kitna hai? Southwest would be 270 minus 45 2.5 plus 225 plus 270 divided by 2, 247.5.
So that will be south 67.5 west, and this would be at current was 2 knots, 2 into 3.5, 7. ये करके find out and then do it. That's all. You can do this for homework and do this for homework. Next class, this will be proper class. It won't be a doubt clearing because we will do stagger karke. Then after I'll start the doubt clearing. Next class Saturday 09:30 to 10:30. Any doubt anybody in this? एक बार कोर्स वाला बता दीजिए दोबारा से कैसे कैसे लिया है कोर्स 310 नो सो 310 तो नॉर्थ 50 वेस्ट हो गया ना क्वाड्रेंटल में यस सर एंड वेस्ट साउथ वेस्ट क्या है वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में ना वेस्ट साउथ वेस्ट करंट को भी अलग से एज अ कोर्स मानेंगे हां करंट को भी सर अलग से कोर्स मान के करेंगे हां करंट लेवल कोर्स होंगे ना सर ये इफेक्ट डीलैट और डिपार्चर इनिशियल डीलैट लगाना है हाँ लगा लो जो अभी कैलकुलेट किया उसको वो करके टोटल ऐड अप करके डीलैट डिपार्चर करके अप्लाई इट एंड फाइंड आउट द राइट पोजीशन वहां पे दोनों वो इंटरसेप्ट प्लॉट करो मिल जाएगा तो सर ये अप्लाई करने के बाद जो हमारा मतलब अराइव्ड डीलैट डीलोंग आएगा उस पे हमने ये इंटरसेप्ट अप्लाई करेक्ट दैट्स ऑल ये 1600 वाला भी ट्रांसफर करेंगे उस पे तो वही तो क्या कर रहे हैं ना 1600 इंटरसेप्ट वी आर ट्रांसफरिंग नो ओके सर That's why I say no plot the 1600 intercept PL as well as 1930 दोनों एक ही DR में plot and then you'll get the answer.